Assalamu alaikum and good morning. Thank you everyone for joining today's webinar. This is basically a second session on climate resilience in Pakistan, and it's part of the webinar series brought to you by the USAID's Higher Education Systems Trending Activity, or HESSA. HESSA is a 5-year USAID funded project working closely with the HEC and 16 public sector universities across Pakistan, focusing on capacity building, introducing relevant policy reforms, and fostering academia-industry linkages to improve graduate employability. HESSA has recently initiated the Pakistan Climate Resilience Research Coordination Network, or RCN that we call it, for researchers to co-produce science-to-action interdisciplinary research, education, and workforce development. So with this brief introduction, I would hand over to Dr. Abdullah from the Institute of Business Administration, IBA Karachi, who is the organizer and moderator of today's webinar. Over to you, Dr. Adam. Thank you, Arsal Saab, for inviting me to host this session. And good morning, everyone. I am Abdullah, Assistant Professor at the Department of Social Sciences and Liberal Arts at IBA Karachi. And with me presenting today are Mr. Muhammad Toheed, who is an urban planner, and Qazi Syed Sadaruddin Sahab. Toheed is an urban planner, geographer, and GIS specialist, and associate director at the Karachi Urban Lab. And he is very active in environmental groups and climate activism in Karachi. And his new book is about to come out early next year, a compilation of his multiple op-ed and blog posts on Karachi's various issues, specifically environmental issues and administrative issues. Whereas Qazi Saab has a long list of social accomplishments to his name. He has served in various capacities and administrative positions, serving Karachi as the coordinator for Niamatullah Khan Sahab City Nazim Karachi in 2001 to 2005. And he's also served as a member of the City Council Karachi in the CDGK era. Qazi Saab is currently Director, Disaster Management and Community Service at Alkhidmat Karachi. And for those of us living in Pakistan, Alkhidmat is a name that does not need any introduction. So, so here is an agenda for today. First, I will give a brief introduction about what heat means as a climate risk and as a disaster, specifically in Pakistan and Karachi. After that, Toheed will describe the Cool Infrastructures project, which was funded by a Global Challenges Research Fund, GCRF from the UK. And the project, much like this research coordination network that we are trying to build, it brought together a transdisciplinary team of researchers to study the various facets of heat and its impact for low-income urban populations. And if there are any burning questions, no pun intended, after Toheed's presentation, we might take one or two of these. Then Qazi Saab will talk about his role at Alkhidmat Karachi and Alkhidmat's current operations in terms of heat risk, such as heat stroke relief camps, urban forests, plantation drives. And then we'll go for a brief moderated Q&A session, and we hope to make a stop by 12. So next, is heat a disaster, or is heat something that is normal, that has always been there, something that we living in Karachi or in Pakistan have always been familiar with as part of a South Asian climate? I will try to nuance the ways that we think about heat in everyday discourse. Next. So heat is quite complex and elusive, not just in the way that it manifests, but also the many ways in which it is perceived by populations who themselves are differentiated along incomes, along locations, belief systems, and their degrees of adaptability. So defining heat is not an easy task. Next. For example, heat is both visible, as in it is measurable, observable, recordable, even predictable to some degree, as well as invisible in the kinds of impacts that it has on the human body, only some of which become immediately visible, but many impacts of heat remain dormant and keep accreting over time within the body, so that their cumulative toll on the body only comes to light in the later years of life, such as renal failure or sudden strokes.
And heat is also both discrete, such as heat wave events or days of intense heat, which, based on climate modeling and projections, are usually expected, announced, planned for, and administratively regulated. But heat is also chronic and longer lasting than only the temporally contained summer season. And the chronic impacts of heat combined with its invisible nature can best be exemplified by, let's say, a humid, suffocating, or inadequately ventilated domestic spaces, such as small kitchens within 40 square yard portion houses in dense, informal urban areas. Um, Thirdly, given its invisible and chronic nature, or perhaps because of it, heat is sometimes perceived as a disaster, but at other times it is perceived as something which is natural, something which has been a disaster for so long that it is no longer worth mentioning that it is a disaster, right? Something that has over time, over space, over everyday practice become a kind of condition of life itself. So next. Over the last 60 years, we have data that shows that Karachi has been consistently warming. Nighttime temperatures have increased by 2.4 degrees and daytime temperatures by 1.6 degrees. That is the average annual maximum temperature, Tmax. I believe Toheed will go over these figures in more detail. Next. And the impacts of such increasing temperatures are differentiated on different kinds of populations. So how people are affected by heat depends on a lot of very local and contextual factors, such as housing materials, their lived densities, infrastructures, as well as the associated cooling practices of residents, such as dressing or not dressing, to ventilation, to more communal modes of cooling. So to understand heat, we really need to understand the kinds of lifestyles or the kind of living conditions that urban populations are experiencing. Next. For example, in a survey that we did last year in 2022 for over 50 plus informal settlements, we found how the rates of water per capita per month vary across these various informal settlements from 4 rupees per capita to about 800, 850 rupees per capita in the city's densest settlements. This affects how people choose to mitigate heat using water as a cooling device. Similarly, in a survey that we're carrying out on heat and thermal perceptions, we find that, and it's not just heat, but a lot of natural hazards that people seem to believe as not dangers or as not something that is, immediately dangerous to their livelihoods, but they would say things like, "Ye sab Allah ki taraf se azmaish hai," this is something from God. Nothing of these, climate change is not something which is dangerous. So these are perceptions that we elicit on ground when we conduct such kinds of research. So currently we're looking at various informal settlements across Karachi, about 50 plus informal settlements all over the city. Next. And and we're also looking at some sites in Sindh, such as Hyderabad and Jacobabad. Next. And we're looking at about 20 cities across all of Pakistan to see exactly what kinds of data can be gathered on what heat is, what thermal perceptions are. And this data will kind of, help us to build in terms of allowing us to see what kinds of research and what kinds of research coordination networks can be built across cities, across regions, across institutions, and more importantly, across academic and research disciplines, right, for the broader aim of heat resilience. So with that, I will hand over to Toheed for his talk. Assalamu alaikum, everyone. Thank you, Dr. Adam. Today my topic is about the informal urban communities and impact of heat, and how can we see the heat as a disaster, or at some extent the academia are talking nowadays the heat is chronic, as well as in some conditions the heat is lethal. So today we will make more insightful understanding about the heat and how the different kind of events those are related to the heat are impact on those communities or already vulnerable in terms of infrastructure, in terms of livelihood, and some other kind of venues. Next.
So we are working at Karachi Urban Lab IBA. We are working on a project which is funded by GCRF and with the University of Edinburgh and some other institution you can see over here on the screen. The project name is School Infrastructures Life with Heat in the Off-Grid City. So the purpose of the project is to know more about those communities those are dealing with heat in the cities like Karachi, where mostly the people are off grid. Likewise, in some of the settlements of Karachi, we get a chance to jump in. Likewise, Liari, where people are facing 12 to 14 hours of load shedding, as well as we visited the Bhit Island, where people are facing load shedding in a way that 18 hours they are off grid. And similarly, in Karachi, we can see over here the water scarcity. So by that mean also the people off grid. So in this project is running in the 4 different countries, including Pakistan, India, Cameroon, and Indonesia. Next. So if we talk about the key objective of the project, the main core object of the project is about to understanding heat through the lens of vulnerability and how it's complex and complicate in different situation, and as well as another core object is about to addressing the gap in the evidences and the data set. As we as we jump in the project, we realize that there is no such kind of climatic data, or we can say that the local climatic data of Karachi. Let's suppose if we want to check out the local temperature of Orangi town, if we want to check out the local temperature of Malir or any other of the neighborhood of Karachi, so we don't have that kind of weather station. By that we can check out the data set. So the data on vulnerability on heat is hampered by lack of attention of the social and ecological context, as well as it's very difficult to make any kind of risk assessment or vulnerability or with this gap. And another core object is about to understanding and scaling up the urban knowledge on the vernacular practices of managing extremes heat. So, how do the marginalized, vulnerable man and woman live with heat, and how and what is thermal comfort by their mean? Because the thermal comfort is different with the different social domains. Likewise, the elite class or middle income group or the people those are living in informal settlement have the different discourse about the thermal comfort. So after that, we jump into the different kind of thermal inequalities and special inequalities, and we try to map out all these special inequalities on the span of Karachi. Next. So if we want to explain our work in Karachi, so first of all, we are looking at heat and what is governance perspective about the heat. As Dr. Adam already explained that this is also a question in Pakistan, heat is disaster or not. Although the PDMA or NDMA issue different kind of alert about the heat, but they are not categorized heat as disaster. So this is a kind of gap, and by this reason, specifically for the incident, those are tied up with the heat are not have sufficient budget to deal with. So it's very important to check out the rhythms of everyday life and how these vulnerable or marginalized communities are affected by heat. And it's also important in their capacity how the people and these communities respond or cope with heat, what their understanding about the cooling practices are. They have affordability to neutralize the impact of heat or not, and also the different kind of infrastructure help them to make them cool or not. This is also a kind of question that we raise day by day. Next. So the first thing is about heat is dynamic
and we want to know about the relationship between the vulnerability, heat, urban spaces, topography, and variegated geographies, and how are state and civil societies and actors managing heat risk in Karachi, and what we can think beyond the heat wave. Likewise, chronic heat impact, those are lasting, and different kind of health issues, those are lasting just because of heat. Next. सो एक हम बात सुनते हैं कि जी गर्मी तो हमेशा से है, कोई नई चीज नहीं. It's a kind of discourse as we jump into the informal settlement, because for the informal dweller, bread and butter is more important as compared to the weather, climate change and any kind of thing. जब हम उनके पास जाते हैं और उनसे ये बात करते हैं कि भाई हीट के बारे में आपका क्या ख्याल है, वो कहते हैं भाई महंगाई बहुत है. तो इस तरह की चीजें. और फिर जब व्हेन वी टॉक अबाउट गर्मी, तो कहते हैं जी गर्मी तो हमेशा से है, या एज डॉक्टर आदम ऑलरेडी एक्सप्लेन यू, कि वो कहते हैं जी तो अल्लाह ताला की तरफ से है कि भाई मौसम चेंज हो रहा है. तो ये तमाम चीजें आती हैं. तो लेकिन वंस वी आर converse with them in depth, so they admit that there is such kind of different kind of incident and health issues, and those are tied up with the heat. Next. So heat, different kind of studies shows that the heat has become more lethal, specifically in South Asian context. So this is a kind of discourse as we talk about heat is disaster or not. So as we already know about the climate change scenario in Pakistan, Pakistan is 8th most vulnerable country in the world according to the Global Risk Index 2021. But if you get a chance to look to the 7 countries, those are prior to us, but their infrastructure, their different kind of services are good as compared to us. So in terms of vulnerability, we can consider ourselves as first in terms of climate risk index. Next. So there are different kind of alarming thing that happen, different kind of advisories, those are given even in the last year to 2022 to 2023, different 5 heat wave advisories from Pakistan Meteorological Department in the last 60 days. So apparently the heat wave span as well as the intensity of the heat incidents are much higher as compared to the last century. Next. So this is another kind of thing which is about how heat relate to the people labor force or labor activity. So working hour lost due to the heat, you can see over here. So it's up to 1995, the total number of hours are less as compared to now. So just because of the temperature are higher and more intense over the time. Next. So heat experience in South Asian context or the global South are very, very different as compared to the rest of the world, because heat is dynamics and understanding of heat is more complex. In case of Karachi or the cities, those are we can say that the coastal cities, the heat is humid, and the different kind of parameter those are emerging once we talk about the ambient temperature, then we shifted to the heat index, and now the academia and researcher are talking about the wet bulb temperature. So this is another kind of move that shifted about to understanding the heat. And in the humid region, cities like Karachi, as I told you, that the option to cool is constrained. Next. Okay, so this is one of the study we done, extreme heat and COVID, and how the extreme heat were and interlinked with the COVID-19. And during the COVID, the slogan was "Stay at home." But what the people can do in a way that when their houses are turned into oven, and it's very hard for them to stay at home. So you can figure out if you following
this link, or if you Google this, you can check out this study. Next. So there are different kind of vulnerabilities in terms of climate change, in which the heat is one of the growing or strong agent. So, but as we talk about the different kind of informal settlement without infrastructure, so in context of Pakistan, we need to make such kind of understanding. uh, what is the status of informal settlement in Pakistan? According to the census 2023, the Pakistan population is 241.49 million, and with the different kind of estimation, we conclude that the estimated population, those are living in informal settlement across Pakistan, is 42.65 million, which is a big number. As well as if we have to look on Karachi, so in Karachi events, if we consider according to the Arif Hassan Saab study, 62% of population of Karachi forced to live in informal settlement. So by that calculation, 12.59 million of people in Karachi, those are forced to live in informal settlement without infrastructure, with interrupted water and electricity, and compromised housing condition. Those are not supported in terms of to facilitate heat, to make them cool. Next. So if we have to look the thermoregulation, so these kind of impact that we can see just because of heat stress, heat exhaustion, heat stroke, body's core temperature, those are greater than 38 degrees centigrade. So the body will lead up to the heat exhaustion or heat stress. And if it cross up to 42 degrees Celsius, so the life is in threat. Next. So Adam already explained about this. These are the meteorological sites in Karachi where the weather station installed, and only three or two sites in Karachi where we can get the data about the heat. Next. So this is some of our finding we have done during the project, as Adam already explained about the two things. So I think I have to move next. So when we talk about the climate change, the IPCC reports are more important. And if we have to look the chapter 6, which is about the city, settlement and key infrastructure, it's more focused on in a way and give a message. The growth of vulnerabilities is greater in the urban informal settlement, and we have a large chunk of urban and informal settlement, as I already mentioned, across Pakistan as well as in Karachi. Next. Next. So back कीजिएगा. So as we have as we have heard that the global warming, but in June 2023, UN announced that the era of global boiling has arrived. So now the heat stress is chronic. These are not just one of extremes. Next. 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 So we have to discuss about the way forward as we talk about the vulnerability and risk. So the best option is about to prioritizing investment to reduce climate risk as well as the heat impacts for low income groups and marginalized communities, or we can call it climate financing. We need to prioritize the climate financing in these informal settlements. Next. So as a way forward, we are trying to bridge the gap in terms of data set about the heat. So on May 24, 2022, we make one MOU with the Karachi Urban Lab as well as Alkhidmat Foundation about the weather station installations. And till now, we installed more than 12 weather stations in the different areas of city, and we tried to cover the periphery areas like Sarjani Town and Gulshan Hadid and
as well as the coastal area to bridge the gap about the local climate. Next. So these are some of our publications under the project of cool infrastructures. Thank you. Thank you, Toheed Saab, for that enlightening presentation. I want to remind the audience that we have a Q&A box or option at the below the Zoom settings where you can see participants and chat and other things. So if you have any questions, you can just type your questions in the Q&A section, and we will come to the questions towards the end because we are a bit short on time. So with this, I would like to invite Qazi Saab for his talk. Qazi Saab would like, if you like, you can. Asha, we'll share the screen. Bismillahirrahmanirrahim. As explained, thank you very much, everyone. As explained by Toheed, we Alkhidmat Foundation, Pakistan, and with the IBA Karachi. Actually, we are partner, with the IBA Karachi Urban Lab to collect the data through weather station in different locations in Karachi. So we are very much happy. The Karachi Urban Lab and Alkhidmat work together for the betterment of Karachi, for the betterment of weather environment. So actually, जो जिस तरह से कहा कि गर्मी तो हमेशा से है, ये बात ठीक है कि गर्मी तो हमेशा से है, लेकिन हमें ये देखना होगा कि इसकी रेमेडी यानी हम कर क्या रहे हैं। गर्मी हमेशा से है, लेकिन जो दरख्त, जो ग्रीनरी हमेशा से थी, वो अब नहीं रही, जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज बहुत तेजी के साथ हो रहा है। मसलन हम ये देखते हैं कि कराची जो एक ज़माने में बहुत हरा भरा शहर हुआ करता था, अब इसमें बहुत तेज़ी के साथ कंस्ट्रक्शंस हो रही हैं, बिल्डिंग्स बन रही हैं। और जो कराची का सबब एरियाज थे, आप ये देखें, अगर सिर्फ गडाफ टाउन को ही ले लें, तो अब हाउसिंग स्कीमें जो हैं वो रिप्लेस कर रही हैं सारी चीज़ों को। नॉर्थ हैदराबाद जो बहुत ग्रीन एरिया हुआ करता था, अब हम वहाँ देखते हैं कि दरख्त काटे जा रहे हैं, बल्कि काट दिए गए। अच्छा, जो सबसे पहली मुसीबत आती है या सबसे पहले जो मुतासिर होता है, वो दरख्त मुतासिर होता है। किसी भी डेवलपमेंट में हम ये देखते हैं, अगर ग्रीन लाइन बस बन रही है तो नॉर्थ हैदराबाद में मौजूद ग्रीन बेल्ट, जिसका नाम ही ग्रीन बेल्ट था, उसको काट दिया जाता है। और अगर यूनिवर्सिटी रोड पे कोई डेवलपमेंट हो रही होती है, गुरु मंदिर से लेकर या यहाँ से लेकर जेल चौरंगी से लेकर सफूरा तक अगर रोड की डेवलपमेंट हो रही है, तो हम देखते हैं सबसे पहले दरख्त काटा जाता है। यानी इन्वायरमेंट को चेंज करने में या इन्वायरमेंट को बदलने के सबसे बड़े जिम्मेदार हम खुद हैं। यानी हम ये देख रहे हैं कि ठीक है, गर्मी हमेशा से होती है, लेकिन लोग दरख्तों का सहारा लिया करते थे, दरख्तों के नीचे बैठ के ठंडक लिया करते थे, दरख्तों के नीचे बैठ के अपने आप को फ्रेश किया करते थे। अब हम इससे महरूम होते जा रहे हैं। अब ये काम किसका है जो इन चीज़ों को रिवाइव करे? स्टेट हमें कहीं पर नज़र नहीं आती। ये स्टेट का काम होता है कि अगर डेवलपमेंट हो रही है तो ग्रीनरी को भी डेवलप किया जाए, लेकिन हम सबसे पहले दरख्तों को काटते हैं, हम पार्कों को उजाड़ते हैं। और सबसे बड़ा अलमिया ये है कि पार्क्स, प्लेग्राउंड, हम उनमें मकानात को तामीर करते हैं, मुख्तलिफ नामों से हम वहाँ पे मकानात बना लेते हैं, बिल्डिंग्स बना लेते हैं, जिसकी वजह से इन्वायरमेंट चेंज होना शुरू हो जाता है। अच्छा, अब आपको ग्रीनरी कहाँ नजर आती है? आप अगर इसका ड्रोन से या किसी चीज से कराची को ओवरव्यू करें तो सिर्फ चंद स्पॉट्स आपको नजर आएंगे जिसमें बहुत ग्रीन है। वो क्या है? वो कब्रिस्तान है कराची के। सकी हसन कब्रिस्तान में अगर आप ऊपर से ज्यादा लेंगे तो आपको एक पॉकेट है जो बहुत ग्रीन नजर आएगा, नीचे जाएंगे तो वो कब्रिस्तान होगा। मूसा कॉलोनी के पास डिफरेंट लोकेशंस पे अगर आपको ग्रीनरी नजर आएगी, ऊपर से वो भी, क्योंकि कब्रिस्तान तो एक बाउंड्री वॉल के अंदर है और जाहिर ठीक है वहां भी होनी चाहिए, बहुत जरूरी है वो भी, लेकिन अब सिर्फ ग्रीनरी वहीं पर रह गई है। अलादीन पार्क को अगर हम उजाड़ देते हैं या तोड़ देते हैं तो उसकी जगह हम नाम तो बाहर लगा देते हैं कि बागे कराची, लेकिन उस बागे कराची में हमें दरख्त नजर नहीं आते, बल्कि कंक्रीट का एक बेचर प्लांट नजर आता है वहां पे, जो फजाई आलूदगी का सबब भी बन रहा है इर्द गिर्द के रहने वालों के लिए।
यानी हम शहरों के अंदर जो है इस तरह की चीजें लेकर आ गए हैं कि जहाँ कंक्रीट का बिटुमेन प्लांट लग गए हैं या ये रेडी टू मिक्स का प्लांट लग गया है, और वो कहाँ लगा है? आबादियों के बीच में। नॉर्थ इस्लामाबाद में लोगों को बड़ी मेहनत करनी पड़ी, कोर्ट में जाना पड़ा कि हमारे घर के पास से इसको हटाएं आप, ये हमारे लिए बीमारी का सबब बन रहे हैं। तो मैं जो बात कह रहा था कि इसमें स्टेट हमें कहीं नजर नहीं आ रही है। मसलन ये काम प्रोविंशियल गवर्नमेंट का है, मसलन ये काम लोकल गवर्नमेंट का है कि लोगों को एक अच्छा एनवायरनमेंट दें, एक अच्छा पुरफजा मुकाम मुहैया करें, लेकिन अफसोस के साथ ऐसा नहीं हो रहा है। और इसके नतीजे में IBA को या कराची अर्बन प्लान को इनको उठना पड़ता है, और ये इनको काम करना पड़ता है, इनको रिपोर्ट्स बनानी पड़ती हैं, और ये रिपोर्ट्स, लेकिन स्टेट हमें कहीं नजर नहीं आती कि वो लोगों के लिए क्या काम कर रही है। तो ये जो डाटा जमा करने का काम हो रहा है, जिसके नतीजे में यकीनन हम कोई ना कोई एक बेहतरीन काम करने में कामयाब हो जाएंगे। मसलन कराची जैसे शहर में सिर्फ एक वेदर स्टेशन हुआ करता था, अब अल्हम्दुलिल्लाह IBA, कराची अर्बन और अलखिदमत मिलके शहर में इस वक्त हम 12 वेदर स्टेशन कायम कर दिया है, करने जा रहे हैं, मजीद बढ़ाएंगे, ताकि डिफरेंट लोकेशन से हमारे पास कोई डाटा आए, और उसके नतीजे में हुकूमतें करने के काम तो एट द लास्ट हुकूमत का ही है, हुकूमत का ही काम है कि वो क्या काम करे। लेकिन जाहिर है जब हम कोई डाटा देंगे तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि इंशाअल्लाह ताला कोई अच्छा काम करे। अच्छा, हमने कुछ सबक भी नहीं सीखा। मसलन आज से कुछ साल पहले जो हीट वेव के नतीजे में हजारों कराची में अमवात हुई, तो हमने कोई लाइन ऑफ एक्शन फ्यूचर की कोई प्लानिंग नहीं की, हमें कुछ नजर नहीं आया। NGOs क्या करती हैं? कोई कैंप लगा लेती हैं लियाकताबाद में, सदर में, बस स्टॉप के पास लोगों को पानी पिलाना शुरू कर देती हैं, ठंडे टावल्स देना शुरू कर देती हैं, ORS पिलाना शुरू कर देती हैं। ये काम NGO ठीक है, वो कर सकती है, कर रही है, और करना चाहिए, उनको अपना हिस्सा इसमें डालना चाहिए। लेकिन जो हुकूमत के करने के काम है कि आप फजाई आलूदगी से अपने शहर को बचाएं, अपने शहर में दरख्त लगाएं, लोगों को मोटिवेट करें, बच्चों को मोटिवेट करें। एक दरख्त जिसके बारे में ये सिर्फ हमारी माशरती जरूरत नहीं है, ये हमारी एक इस्लामी जरूरत भी है। हमें कहा गया है कि दरख्त लगाओ, ये सारी चीजें हमारे अहकामात में भी शामिल हैं। तो ठीक है, ये NGO काम कर रही है, करना चाहिए, और हमने भी किए हैं काम, लेकिन उसके बावजूद मैं कहता हूं कि जो हमारे यहाँ NDA में है, PDA में है, क्या वो इस बात का इंतजार कर रही होती हैं कि कोई हादसा हो, लोग मरे, उसके बाद चंद NGOs खड़ी हो जाएं और वो लोगों को पानी पिलाना शुरू कर दें? बिल्कुल करना चाहिए ये काम। तो हमें कलेक्टिवली कोई ऐसी रिपोर्ट, कोई ऐसी प्रपोजल हुकूमतों को भेजनी चाहिए। मसलन मैं सिटी काउंसिल का मेंबर हूँ, मुझे कहीं हुकूमत नजर नहीं आती कि वो इस तरफ कोई तवज्जो दे, इस तरफ कोई निशानदही करे, इस तरफ कोई प्लानिंग करे। आप बजट बुक्स अगर उठा के देखें तो बजट में ऐसी कोई चीज नजर नहीं आ रही होती है कि जिसके नतीजे में शहरियों को कोई सहूलत मिल सके। तो ये मैं समझता हूँ कि IBA, कराची अर्बन, अलखिदमत और दीगर NGOs वो सब मिलकर इस शहर के लिए, इस मुल्क के लिए इस चीज को फोकस करें। मसलन अब अलखिदमत जो है वो अपने तौर पे अर्बन फॉरेस्ट के हवाले से उसने सी व्यू पे काम किया, जाम शोरों में काम किया, गुलशन हदीद में काम किया, फेडरल बी एरिया के इलाके में काम किया, इवन पंजाब के इलाके में काम किया। जो हमें पौधे लगाने का काम, दरख्त लगाने का काम, हमें इसको और बड़े पैमाने पे इसका, मसलन आप देखें कि हमारी पूरी सी की बेल्ट जो है, आपको कहीं ग्रीनरी नजर नहीं आएगी, हम उस पर कोई काम नहीं कर रहे होते हैं, चाहे वो कैंटोनमेंट के एरियाज हो, चाहे वो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के एरियाज हो। हमने बिल्कुल उजाड़ के रख दिया इन सारी चीजों को, जहां पे हम बहुत आसानी से ट्रीटमेंट प्लान के जरिए काम कर सकते हैं, लेकिन हमारी ज़ाहिर है तवज्जो होनी चाहिए। दूसरा, अलखिदमत का एक और काम जो हम करना चाहते हैं, जो करने जा रहे हैं, जो हमने शुरू किया है, वो किचन गार्डन का काम है। उसके कई फवायद हैं। देखिए ना, एक तो आपको किचन गार्डन के जरिए घर में सब्जियां भी मिल सकती हैं, लेकिन अगर आप अपनी छत पे ये सारा काम करें तो वहाँ का वेदर भी अच्छा होगा, वहाँ का माहौल भी अच्छा होगा, बैठने की भी जगह होगी। तो ये सारे काम अलखिदमत अल्हम्दुलिल्लाह अपने प्लेटफॉर्म से कर रही है। हम समझते हैं कि किचन गार्डन के काम को हमें बहुत प्रमोट करना चाहिए, शजरकारी के काम को हमें बहुत मतलब हमारे पास हमारी यूनियन काउंसिल अलखिदमत के तहत हमने पूरी ट्रैक्टर ट्रॉलियां ली हुई है, डिगिंग करने का सामान लिया हुआ है, और वो काम हम, आप ये देख भी रहे होंगे पिक्चर्स में, हम ये काम मुस्तकिल बुनियादों पर हमने अपने काम का एक हिस्सा बना लिया है।
और अल्हम्दुलिल्लाह हम ये ग्रीनरी का काम मुख्तलिफ सेगमेंट्स में, मुख्तलिफ इलाकों में कर रहे हैं। इसकी प्रमोशन भी होनी चाहिए, बच्चों में अवेयरनेस देनी चाहिए, स्कूलों में सब्जेक्ट होना चाहिए, स्कूलों में हमें ये बात पढ़ानी चाहिए बच्चों को कि ग्रीनरी के क्या फ़वायद हैं और ये एक सदका जारिया का काम है, ये हमें करना चाहिए। बहुत शुक्रिया तौहीद, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। मेरा ख्याल है कि इसके नतीजे में हम लोग कोई मिलजुल कर एक अच्छा काम करने की कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। Thank you, Qazi Saab, for explaining all the efforts that Alkhidmat is taking in terms of providing relief to citizens, in terms of heat stroke, in terms of plantation drives, and especially in terms of educating and making aware the public, the younger generation, and as well as politically negotiating. जैसे आप सिटी काउंसिल के मेंबर के तौर पे जो आपकी ऑब्जर्वेशंस रही हैं या बजट के हवाले से जो रही हैं, and integrating all of those into kind of a holistic strategy for bringing to light how the climate and how the environment can be impacted through multiple scales of action. So thank you for that. I have a couple of questions from the audience. तो हम कुछ सवाल अभी ले लेते हैं, because we will have to wrap up in 10 minutes. You can always follow us live. आप कराची अर्बन लैब को या मुझे ईमेल के थ्रू, तौहीद साहब को, काजी साहब को reaching out to Alkhidmat. You can also provide, pose additional questions if you have. We'll take some questions here. एक सवाल तौहीद साहब के लिए है कि how will we reduce temperatures in poor people's house? This is from Professor Abdul Hakim Jamali from People's University of Medical Health. जी बिल्कुल, ये बहुत कॉम्प्लेक्स सिनेरियो है इफ वी टॉक अबाउट द इनफॉर्मल सेटलमेंट, क्योंकि इनफॉर्मल सेटलमेंट भी हमारे यहाँ कोई एक यानी कि ख़ास पैटर्न की नहीं है। जैसे बम्बई वगैरह की हम बात करें तो हम स्टेट अवे उसको नाम देते हैं कि झोपड़पट्टी, लेकिन हमारे यहाँ चूँकि वो झोपड़पट्टी तो बहुत कम है, लेकिन हमारे यहाँ जो इनफॉर्मल सेटलमेंट मिलती है या अर्बन पुअर हाउसिंग है, वो बेसिकली जो है वो कन्फाइंड है विद कंक्रीट स्ट्रक्चर। और इसके साथ साथ उसमें हमें एक और चीज नजर आती है कि क्योंकि वक्त के साथ साथ जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ी है, इन घरों के साइजेस जो है वो बहुत छोटे होते जा रहे हैं। यानी कि इस वक्त हम देख रहे हैं कि एक फैमिली जो है वो एक कमरे के मकान में भी, कराची में जो है वो एक फैमिली एक कमरे के मकान में रहती है, जिसका एरिया आप कंसीडर करें कि 30 स्क्वायर यार्ड एरिया है। अब विद इन 30 स्क्वायर यार्ड एरिया and the different families are living with the higher density, तो उसमें जो सिनेरियो हमें नजर आ रहा है वो ये नजर आता है कि वहां पर उनके लिए सबसे बड़ा मसला जो है वो वेंटिलेशन है। तो वेंटिलेशन का एक मसला बहुत बड़ा है जिसको डील करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे यहाँ अब वो आर्किटेक्चर रहा ही नहीं कि हम ये तस्वुर करें कि पंखे के बगैर रहा जा सकता है। तो अगर वेंटिलेशन प्रॉपर हो और हमें मौका मिला कुछ कम्युनिटीज में काम करने का, जैसे हमने किमाड़ी में जो भुट्टा विलेज है वहां पर हमने काम किया, तो वहां पर लोगों ने हमें बताया कि हमने अपने घर को बेहतर इस तरह किया, बहुत छोटे छोटे घरों के साथ में, कि हमने जो है कुछ नई वेंटिलेशन दी, उससे घर जो है वो ठंडा हो गया पहले की निस्बत। क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का मसला वैसे ही मौजूद रहेगा और है मौजूद है, आगे और प्रॉब्लमेटिक होगा। और जो है वाटर स्कैरसिटी, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है कराची में, तो वो एक बहुत बड़ा मसला है। तो आई थिंक बेस्ट वे, जैसे काजी साहब ने बताया, एक तो दरख्त लगाना है, लेकिन चूंकि इनफॉर्मल सेटलमेंट्स में देयर इज नो सच काइंड ऑफ स्पेस फॉर द प्लांटेशन, वो भी बहुत कम होती है। लेकिन किचन गार्डनिंग या बहुत ही डिफरेंट तरह की जो एक समझ ले प्लांटेशन है जो कि बहुत कम एरिया में होती है, वो की जा सकती है। एक तो सेकंड ये किया जा सकता है कि वेंटिलेटेड किया जाए अपने घरों को, वो लोग वेंटिलेट करें किसी अंदाज में कि वेंटिलेशन बहुत प्रॉपर हो, तो फिर जो है बेहतर हो सकता है। बहुत शुक्रिया। अच्छा, आई होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन फॉर जमाली साहब। अच्छा, मेरा एक सवाल और थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन, क्योंकि तौहीद साहब ने बात की थी बजट्स के और इस तरह काजी साहब ने बात की कि सरकारी सतह पे या विद इन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, एनडीएमए, पीडीएमए, heat has not been declared a disaster as opposed to, let's say, floods, right? So this is a theme that we also observe in conversations that we have colleagues outside of Karachi and outside of Sindh, right? So पंजाब की यूनिवर्सिटीज में जो रिसर्चेस हो रही हैं या अक्रॉस नॉर्दर्न एरियाज में जो हो रही हैं, सो देयर इज अ लॉट ऑफ फोकस ऑन ग्लेशियर लेक, वो जो आउटबर्स्ट होती हैं, या वाटर सिस्टम्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है,
क्रिटिकल वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, फ्लडिंग इवेंट्स हैं, फिर कमिंग फ्रॉम देयर इनटू सिंध, तो उसको एज अ डिजास्टर डिक्लेयर करके या उसकी रिलीफ जो है वो ज्यादा फॉर्मलाइज्ड एंड स्ट्रक्चर्ड वे में डिसेमिनेट होती है एट द नेशनल एंड प्रोविंशियल लेवल. But Karachi and heat and humidity seem to be an anomaly in the climate or disaster landscape of or the national disaster imagination, let's say. So इसको हम किस तरह से tackle कर सकते हैं on a more scaled up version, provincial level पे, national level पे? Should we introduce some policies? Should we allocate a budget? या पहला स्टेप क्या होगा इसको डिजास्टर डिक्लेयर करने में और इसके असरात क्या हो सकते हैं? तो ये सवाल तौहीद साहब और काजी साहब से दोनों हैं, जो आपने से पहले लेना चाहे. चले मैं पहले इस पे जो है कमेंट कर देता हूँ, फिर काजी साहब से कमेंट ले लेंगे. देखिए, पहली चीज तो ये है, क्योंकि जो है हीट इज नॉट डिक्लेयर ए डिजास्टर, सो देयर इज नो स्पेसिफिक काइंड ऑफ बजट टू टैकल विद द हीट. तो हम कोई प्रोएक्टिव अप्रोच के साथ काम नहीं कर सकते. इसे फर्ज करें कि जो है वो आपका जो है वो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने कहा कि अच्छा जी, या फिर एनडीएमए ने, पीटीएमए ने अलर्ट जारी की कि भाई आने वाला हफ्ता जो है वो शदीद किस्म की जो है वो गर्मी पड़ सकती है, दैट कैन लीड अप टू द हीट वेव. उन्होंने एक कह दिया. अब इशू ये है कि अगर हम ये बात करें कि भाई इदारे इस सिलसिले में क्या करेंगे, तो इदारा जो हमारे पास बनता है वो बनता है पीडीएमए. तो पीडीएमए के पास चूंकि इस हेडर में कोई बजट ही नहीं है, तो वो तो कोई काम नहीं कर सकता. अब क्या होता है कि फिर वो एडहॉक बेसिस पर जो है वो कमिश्नर्स को, कमिश्नर कराची को, डिप्टी कमिश्नर को कहा जाता है कि अच्छा जी आपको रिलीफ कैंप लगा लें. लेकिन मसला ये कि उनके पास भी कोई बजट नहीं है. और एक और चीज मैं आपको बताऊं, एट द स्केल ऑफ सिंध, एज वी नो अबाउट दैट, के जो आपकी पीडीएमए से नीचे जो अथॉरिटी होती है, जिसका बेसिकली काम, जिसकी तमाम जिम्मेदारी है, जो डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, वो जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता उसका इंफ्रास्ट्रक्चर. और वो जो है वो डिप्टी कमिश्नर को एडॉक बेसिस पर ये काम दिया जाता है कि जी आप ये काम कर लें. अब ना उनके पास बजट है, ना उनके पास अलग से वर्कफोर्स है इसको डील करने की. अब वो क्या करते हैं कि वो अपने असिस्टेंट कमिश्नर को कहते हैं, और फिर उसके बाद होता क्या है कि हमें नजर आता है कि वो असिस्टेंट कमिश्नर की जानिब से मुख्तलिफ मार्केट में पैगाम जाता है कि जी शॉपकीपर जो है वो वाटर कूलर रखें लाजमी. और वो बड़ी खुशी से बताते हैं कि जी आधे घंटे में हम जो है वो पूरी मार्केट में सब जगहों पर जो है वो मोबाइल गई थी, और उसके बाद वहां पर लोगों ने वाटर कूलर रख लिए. तो दिस इज नॉट द सॉल्यूशन एग्जैक्टली टू डील विद द हीट. इट्स अ काइंड ऑफ लोकल, एक वो तो बन सकती है कि हमने भाई जुगाड़ के तौर पर जो है वो ये काम कर लिया. लेकिन अगर हम स्टेट एजेंसीज के पैटर्न को देखते हुए चले, जिस तरह डॉक्टर आदम अब्दुल्ला एक्सप्लेन यू अबाउट टू टैकल द फ्लडिंग एंड अदर थिंग, उस तरह से तो काम नहीं हो पा रहा ना. तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है. तो आई थिंक पहली चीज ये है कि इसको एक तो डिक्लेयर किया जाए एज अ डिजास्टर, और दूसरी चीज ये, जैसे ये डिक्लेयर होगा इसका हेडर आ जाएगा बजट का, और एटलीस्ट कुछ हॉस्पिटल्स को दिया जा सकता है, कुछ और तरह की प्रोएक्टिव अप्रोच की जा सकती है कि इसके लिए वक्त से पहले जो है कुछ तैयारी की जाए. थैंक यू जी. बहुत तौहीद ने एक्सप्लेन किया, लेकिन मैं इसमें इस तरह से बताऊं, गालिबन इन्हीं की कंटिन्यूशन होगी कि डेफिनेटली इसको डिक्लेयर भी करना चाहिए, और हर लेवल पे, मसलन सिटी काउंसिल की ये जिम्मेदारी होनी चाहिए कि इसको रिजोल्यूशन के जरिए हाउस में इस चीज को डिक्लेयर करवाए. देखिए, हर फोरम को अपनी अपनी सतह पर आवाज उठानी पड़ेगी. प्रोविंशियल गवर्नमेंट में अगर इसके कोई मेंबर्स हैं प्रोविंशियल गवर्नमेंट के या असेंबली के, तो उनको रेजोल्यूशंस के जरिए इसको डिक्लेयर करवाना होगा. इसी तरीके से हम ये देखते हैं कि हमारे पास कराची में 7 डिस्ट्रिक्ट्स हैं. प्रोविंशियल तो आपने बना दी, और जाहिर है उसमें कोई 1 या 15 लोग एम्प्लॉय होंगे, लेकिन नीचे क्या मैकेनिज्म है वो किसी के पास नहीं है. मसलन अलखिदमत ने कराची में एक एनजीओ होते हुए 13 डिजास्टर सेंटर्स बनाए हुए हैं, 13, और वहां पे इक्विपमेंट्स भी दिए हुए हैं. लेकिन अलखिदमत क्या कर सकती है अगर स्टेट शामिल नहीं हो? हमें ये करना चाहिए कि 7 डिस्ट्रिक्ट्स में इसका कोई मैकेनिज्म बनाना होगा नीचे लेवल पे, ताकि डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट फौरी तौर पे अगर कहीं भी कोई ऐसा डिजास्टर होता है, इवन हीट वेव होती है या कोई भी चीज होती है, तो वो लोकली बेशक एनजीओ की मदद से करें, लेकिन वो निचली सतह पर इन चीजों को हैंडल कर सके. अब देखिए, टर्की में भी जलजला आया, उनके यहाँ पूरा एक निजाम मौजूद है, आफात के नाम से उनका एक इदारा मौजूद है. दुनिया से लोग गए काम करने, अलखिदमत भी गई, अलखिदमत को भी इनवाइट किया गया, उसने भी अपनी एक्सपर्टीज वहां शामिल की. लेकिन
उनकी जो अपनी गवर्नमेंट की उन्होंने जो उनका इदारा था, मिसाल के तौर पे एनडीएमए था, वो उसने इतने शानदार तरीके से सारी चीजें टैकल की और लोगों को इक्विप भी किया, लोगों को निकाला भी, रेस्क्यू भी किया, सारे काम किए। एक शोबा बना हुआ था, मशीनें उसके लिए फिक्स थी, लोग उसके लिए मुख्तस थे, उनका यूनिफॉर्म मुख्तस था। लेकिन हमारे यहाँ कोई ऐसी चीज नजर नहीं आती। लेकिन हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ही मसलन कोई एक डिस्ट्रिक्ट इनिशिएटिव ले ले, इंशाल्लाह ताला बाकी डिस्ट्रिक्ट भी इनिशिएटिव लेते चले जाएंगे। तो निचली सतह पे हमें ग्रास रूट लेवल पे ये सिस्टम बनाना होगा, थ्रू द काउंसिल ऑफ सिटी काउंसिल, थ्रू द काउंसिल ऑफ टाउन काउंसिल। हमें इस तरीके का मैकेनिज्म थ्रू रेजोल्यूशन ये बनाना होगा ताकि निचली सतह पर लोगों को रिलीफ मिल सके। थैंक यू काजी साहब एंड तौहीद फॉर एड्रेसिंग दिस। एक सवाल और है ज़करिया खान का कि इनफॉर्मल सेटलमेंट्स कैन दे बी रेजिलिएंट फ्रेंडली, कि अगर अर्ली वार्निंग सिस्टम्स उसमें एम्प्लॉय किए जाएं, सो एज कम्पेयर टू फॉर्मल सेटलमेंट्स, सो देयर इम्पैक्ट्स विल बी माइनर। डू यू थिंक दैट दिस कैन वर्क विद इनफॉर्मल सेटलमेंट्स, कि उन्हें अगर पहले से वार्न कर दें किसी भी लेट्स से अर्बन फ्लडिंग इवेंट से या हीट इवेंट से, उनमें कैसे ऑपरेट करना चाहिए अर्ली वार्निंग सिस्टम? आई थिंक दिस इज व्हाट ज़करिया इज आस्किंग, सो एनीवन ऑफ यू वुड लाइक टू एड्रेस दैट? भाई साहब, आप पहले रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे? देखिए, अगर मेरा ख्याल में लोगों को पहले से इन्फॉर्म करने के लिए कई चीज़ें होती हैं। मसलन ज़ाहिर है अखबारात में इश्तिहारात भी हो सकते हैं, और मुख्तलिफ स्कूल बहुत बड़ा टूल हो सकता है कि आप स्कूल और कॉलेज के ज़रिए बच्चों को कम से कम ये सारे मैसेजेस पहुँचाएं। लेकिन हमारे यहाँ एक बड़ा ज़बरदस्त निज़ाम मौजूद है मसाजिद का। अगर हम जुमे में लोगों को, बड़ी तादाद में लोगों को अगर स्टेट ये पैगाम दे देती है और बता देती है कि जनाब ये पीरियड्स जो हैं इस हवाले से होंगे, तो क्या गवर्नमेंट जो है निचली सतह पर मसाजिद के ज़रिए, इमाम साहबान के ज़रिए क्या ये चीज़ें या हिदायत के लिए कोई एक फॉर्मेट जारी कर सकती है? वो बता सकती है कि ये उसूल हैं, ये हिदायत हैं, ये पैरामीटर्स हैं, इन पे लोगों को अवेयर किया जाए। तो हमारे पास सिस्टम, मतलब उसको यूज करने की जरूरत है सिंसियरिटी के साथ। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट या डीसी साहब इसमें कहीं पे खड़े होकर ऐलान नहीं कर सकते, पब्लिक को जमा नहीं कर सकते, लेकिन स्कूल्स मौजूद हैं, स्कूल्स को हिदायत जा सकती हैं। इसी तरह से मसाजिद मौजूद हैं, जुमे के दिन पैगाम जा सकता है। तो चीजें पहले से हमें अगेन वही है कि हुकूमत अपना क्या काम करती है और वो नीचे तक किस तरह से बात को पहुंचाती है। ठीक है, तौहीद इफ यू वुड लाइक। एक और चीज बिल्कुल काजी साहब ने जो कहा बहुत दुरुस्त है कि हम जो है वो किस अंदाज में इस मैसेज को जो है वो कम्युनिटी तक पहुंचा सकते हैं, बाय दैट एंड की कम्युनिटी ये क्लेम ना करे कि हमें मैसेज नहीं मिल सका। ठीक है, बिल्कुल। अच्छा, एक और चीज है, जो कम्युनिटी रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जो कम्युनिटी इन्फ्लुएंसर होते हैं, उनको मुख्तलिफ तरह की छोटी छोटी ट्रेनिंग दी जा सकती है डिफरेंट तरह के डिजास्टर्स के हवाले से, चाहे वो हीट वेव हो, कि अच्छा उसमें क्या करना है। ठीक है, अभी स्टेट को वहां पहुंचने में टाइम लग रहा है, लेकिन इन द मेन टाइम हाउ कैन दे डील द सिचुएशन एज अ फर्स्ट रिस्पॉन्डर। ये वाली चीज भी बहुत अहम है, क्योंकि आपको याद होगा कि एक वक्त था, मैंने अपने बचपन में देखा, इस शहर में जो है वो सिविल डिफेंस, शहरी दिफा की एक्सरसाइज हुआ करती थी। मुझे तो ये याद है कि अच्छा जी, लोग जो है वो रस्सियों के जरिए से चढ़ने की और दीगर तरह की फायर फाइटिंग, ये तमाम चीजें मैंने खुद देखा, अपने इलाके में भी ये होती थी। लेकिन आज मसला ये है कि हमारे पास ना स्काउट्स बचे, ना हमारे पास ये शहरी दिफा की प्रैक्टिस बची। बस एक शहर में एक अजीब सी भगदड़ और ये वाले मामला ज्यादा नजर आ रहे हैं। तो शहर को संभालने के लिए, शहर को बेहतर करने के लिए ना कोई वो अंदाज नजर आ रहा है जैसा उस वक्त नजर आता था। तो आई थिंक कि इसको कम्युनिटी रिप्रेजेंटेटिव को जो है इसमें जो है अवेयरनेस और ट्रेनिंग, ये जो है गवर्नमेंट की सतह पर हो सकती है, क्योंकि सिविल डिफेंस का बजट आज भी एलोकेट होता है और सिविल डिफेंस के ऑफिसेज जरूर मौजूद है, लोग उससे जो है वो बेनिफिट ड्रॉ कर रहे हैं, जो भी उसके एम्प्लॉयज हैं, लेकिन ग्राउंड पे उनकी प्रेजेंस जो है वो नहीं है। तो क्यों नहीं चाहिए? मैं इसमें ऐड कर दूं तौहीद एक चीज और, कि इस वक्त कराची में यूनियन की सतह पर इलेक्टेड लोग मौजूद हैं, यानी यूनियन कमिटीज बनी हुई है बिल्कुल निचली सतह पे, जो 50,000 लोगों को या 1 लाख लोगों को उनकी कस्टोडियन है वो। तो उस सतह पे काउंसलर्स के जरिए, इलेक्टेड चेयरमैन के जरिए ये सारे काम हो सकते हैं, और जाहिर है वो कम्युनिटी के लीडर्स हैं, तो उनके जरिए भी। मसलन अलखिदमत में आपके प्लेटफॉर्म से ही बता दूं कि हम इस महीने मिड ऑफ नवंबर में एक ट्रेनिंग का प्रोग्राम कर रहे हैं। हमने वॉलंटियर्स कराची के हर डिस्ट्रिक्ट से कलेक्ट किए हैं, उनका डाटा लिया है, उनकी एक ट्रेनिंग, वो टीम इस तरीके की हम बना रहे हैं
कि कराची में खुदा ना खास्ता कोई डिजास्टर हो, पाकिस्तान में खुदा ना खास्ता कोई डिजास्टर, या बैनुल-अक़वामी इंटरनेशनली उनको कहीं जाना पड़े, तो हमें इक्विप्ड होना चाहिए, हमें ट्रेनिंग लेनी चाहिए। तो हम स्काउट्स के साथ उनकी जगह को इस्तेमाल करते हुए अलखिदमत के प्लेटफॉर्म से एक बहुत बड़ी ट्रेनिंग अरेंज कर रहे हैं कि जिसमें लोगों को हीट वेव के हवाले से भी ट्रेनिंग दी जाएगी। जिनको लोग अगर फ्लड आता है तो उनको ट्रेनिंग किस तरह, अगर कोई बिल्डिंग कोलैप्स होती है तो कैसे। तो अल्हम्दुलिल्लाह अलखिदमत अपने हिस्से का ये काम आप लोगों के ताउन से और आप लोगों के फीडबैक से ये कर रही है, और इंशाल्लाह इसी महीने हम एक बड़ा प्रोग्राम भी अरेंज कर रहे हैं। Thank you so much, Qazi Saab and Toheed Saab, for addressing that question. There are still a few questions in the Q&A box, but since we are actually over time because we started a few minutes late, I would like to thank Qazi Saab for your time and for sharing your knowledge and your insights from your experiences with us. Toheed Saab, thank you so much for explaining the project and explaining how grants and teams work across institutions and across countries, and also highlighting, this conversation highlights some of the potential gaps in knowledge and gaps in practice where we can look and we can work to kind of propose new kinds of research networks, perhaps across academics and philanthropists, across government or state institutions and researchers, or even across various regions in Sindh or in versus Sindh and Punjab or in the northern areas of Pakistan. So I hope today's session was helpful in bringing out these insights and these possibilities for all of us as researchers and academics, as well as civil society members. I would like to thank Arsal and the HESSA team for facilitating and coordinating this seminar for us. And hopefully we will have another seminar in the series early next month. So thank you all for joining and listening in, and please get in touch if you have further questions. I would like to conclude with this. Allah Hafiz. Have a nice day, everyone. Thank you. Thank you.